So hello students, in previous session we studied about the tissues, what is the utility of tissue in multicellular organism, what is meant by division of labor, and we also studied how plant tissues and animal tissues are uh, different. Actually, why plant tissues and animal tissues are not the same. We studied all about this. Now, today in this session, we will be taking the plant tissue, but not the complete study. We will take only this part. This is the flow chart of the plant tissue. Plant tissue can be divided into two types: meristematic tissue and permanent tissue. Permanent tissue is further divided into two categories, that is simple and complex. And simple permanent tissue is further divided into three categories: parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. Okay, and complex permanent tissue is further divided into two categories, that is xylem and phloem. In this session we will be studying about only this part, that is the meristematic tissue, and in the subsequent sessions we will be dealing with the permanent tissue. First of all we will study about the simple one, and then we will be studying about the complex one. Okay, so let's begin with the meristematic tissues. Meristematic tissues are actually they are present in the growing region of the plants, that is the tips of the root, stem and branches. Shoot tip, root tip and the branch tip, इन सब में meristematic tissues होते हैं. They have actually, why they are present on the tips of the all these parts of the plant, that is root, stem and tissue, because they have the capability of dividing continuously. ठीक है, वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, एंड देयरफॉर and thereby they help in the growth of the plant. We can divide the meristematic tissues into three types as per the position or as per the location of these meristematic tissues in plants. We divide them into three parts, that is first is apical meristematic tissue. Apical meristematic tissue. Apical meristematic tissues are present in the tips of the roots and stems. They help in the growth of stem and leaf. ये देखो टिप पर, ये स्टेम की टिप है. यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे वो कौन से होंगे? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम. ओके, और ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए रूट की टिप पर जो होंगे वो होंगे रूट एपिकल meristem. Okay, then second type of meristematic tissues are known as lateral meristematic tissues, and they are present on the sides of the stems and the roots. Sides, ये देखिए रेड से दिखाया हुआ है, ये sides इस साइड पे होते हैं. ठीक है, अगर हम इसका ये ट्रांसफर सेक्शन काटें या क्रॉस सेक्शन ले तो आपको ये रेड से पिंक कलर से दिखाया हुआ है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और लेटरल मेरिस्टेम्स. दे हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. जितनी स्टेम मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी, उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, वो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ओके, and the third type, this is intercalary meristematic tissues. Intercalary meristematic tissues are present at the base of the leaves and internodes. अब देखो पहले base of the leaf, ये है base of the leaf. Okay, this is base of the leaf. तो यहाँ पर कौन से होंगे? Intercalary meristematic tissues. Intercalary meristem are also present in the internodes. Internodes are
the are the places between the two leaves. ये दो लीव्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं. वहाँ पर भी आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स दिखेंगे और क्लियरली आपको बताते हैं हम. So we are now comparing these three types of meristematic tissues in the tabular form, so that the location as well as the function of each meristem is clear. Apical meristem, it is present in the growing tips of shoot, root and root. What is the function? Its primary function is the growth. Okay, so you can see apical meristem in this diagram. Intercalary meristem, they are present at the base of the leaves and internodes. So this is the location of the intercalary meristem. Okay, and its function is to increase the length of the organ like leaves and internodes. Internodes, दो लीव्स के बीच, ये एक लीव है, ये दूसरी लीव है, उसके बीच में जो पोर्शन होता है इंटरनोड बोलते हैं. तो इसकी लेंथ को इंक्रीज करना इसका काम होता है. ओके, देन द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लेटरल मेरिस्टेम. ओके, it is found in the woody trees and plants only. Okay, जो मोटे मोटे ट्रीज होते हैं उसी में होती है. एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट. साइड, ये देखो ऐसे करके दिखाया है इसमें, साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. ओके, its function is to increase the diameter and girth. diameter, जितना width में जो इंक्रीज होता है स्टेम या रूट में, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टेम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. In the next session we will be studying about the permanent tissues. These meristematic tissues are not permanent tissues, they keep on dividing, and these tissues after some time they take a fixed shape and function, and then they are converted into permanent tissues. Okay, so they are temporary. जब तक वो डिवाइड करते हैं वो टेम्परेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही कहलाते हैं, और जैसे ही उनकी एक डेफिनेट शेप और फिक्स्ड फंक्शन हो जाता है वो परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ जाते हैं. और परमानेंट टिश्यू को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, जो हम अभी नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे. ओके, टेक केयर, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड.